हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम साजिद हसन है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय एचएमआई वाटर फ्रंट। बिल्डिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बारे में अब हम जब बाहर निकलते हैं, मेरे जैसे लोग, तो पाकिस्तानी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं डिप्रेशन की। मैं डिप्रेस होता नहीं हूँ। आज मैंने आपके लिए एक ऐसा पाकिस्तानी मिलवाया है कि जो कुछ भी हो जाए वो अपना काम करता रहता है। कुछ बातें ऐसी भी की हैं जिससे हमारे दिल टूटे हैं, और आज हम बात करेंगे उनसे कि यार ये क्या किया, ये क्या कहा आपने। तो आइए, आपकी सुपरस्टार, डुपरस्टार, आउटस्टैंडिंग एक्टर, एक डिजाइनर, एक खुद क्रिएटर, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप अभी मैंने कुछ आपकी मुलाकात में करवाना चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात, द वन एंड ओनली आयशा उमर। Thank you for आयशा, this वेल डन, kind introduction. वेल प्लेड आयशा। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, पता नहीं इनको याद हो ना हो। यूसुफ सली की हवेली में एक यूसुफ साहब, एक बहुत मशहूर आदमी है, सोशल काम भी बड़ा किया, Patron of the arts. पेट्रन ऑफ द आर्ट्स। उनके यहाँ मुलाकात हुई थी बहुत पहले, और ये बहुत यंग थी उस वक्त, और ये उस वक्त एक्टिंग और टेलीविजन के बारे में मुझसे दो चार बातें की इन्होंने। हाँ. और मैंने इनको डिसवेड किया। मैंने कहा बेटे तू नहीं कर पाएगी, इतनी पितीत सी बच्ची, इतनी छोटी सी, कॉलेज में थी उस कॉलेज में थी और ये इतनी कॉन्फिडेंट उस वक्त भी थी। लेकिन आयशा, here you are. There I am. I don't remember this conversation. You don't, but I do. Anyway, it doesn't matter. All आप बड़े nice. लोगों को कौन सी याद रहती, जब आदमी शोहरत के बुलंदियों में पहुंच जाता है ना, जी नहीं, ऐसी तो कोई हर बात आदमी नहीं है, नीचे मुझे कीड़ा सब कीड़ा याद दिखाई रहता है. देता है? Maybe I don't know. I don't remember it. But you were passionate about acting for a while. I was actually always a painter. उस वक्त भी मैं पेंटिंग कर रही थी, I believe. तो अभी तुम पेंटर हो कि एक्टर हो? So I went to NCA, the art college, and I think when I met you, मैं NCA में थी. है ना? And Yusuf uncle is actually my best friend's khalu. Right. So we kind of grew up around him. उन्होंने हमें बड़े होते देखा, and he was always very supportive and pushing me with everything. He's the one who said गाना गाओ, and he said do everything, paint and act. So I started acting in college, actually when I was a kid. मुझे चाइल्ड रोल्स कभी कभार आ जाते थे थ्रू मुनीजा हाशमी. Right. शी वाज द एमडी ऑफ पीटीवी एट वन टाइम. फैज साहब की बेटी. फैज साहब की बेटी. तो वो मेरी फुप्पो की बेस्ट फ्रेंड थी. तो बचपन में वी डिड सम मजे में कुछ चीजें कर ली उनके साथ. अंकल सरगम एक होते थे, इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू रिमेंबर. क्या बात है, दोस्त थे बहुत यार, फैसल फारूक साहब. यस. तो उनके साथ आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू लिटिल plays for television. And उसके बाद in college I started acting in a sitcom. तो बचपन में किस को देख लिया था जिसको एक्टिंग का शौक हो गया इतना? शौक या अपने आप को देख के लगा कि मैं नहीं, बहुत I खूबसूरत only लड़की wanted to be a हूँ. painter. हाँ? I only wanted to paint. But acting was giving me extra money on the side to help my family. So I kept doing it. And then work kept coming. माशाल्लाह. अभी पेंटिंग कर रही हो कि छोड़ दी? नहीं, लेकिन करूँगी. I want to paint more. I'm not painting these days at all. कितने साल से पेंट नहीं किया? ऐसा सच बता दो. Well, I paint my face every day. क्या बात की है, 2 घंटे तो नहीं. इतना खूबसूरत Right? मेकअप करती नहीं है. Brush strokes तो मुंह पे होते रहते हैं ना. No treatment, no nothing, ना. No. You're just the way you are. I mean, well, there are a lot of things in my life that I do differently from people. I'm trading into very dangerous territory. No. Why? So I follow a certain way of eating, and Okay. that has helped in keeping me fresh and young. So nutritionally, do you think that this regimen that you're keeping in It's terms of changed your my diet? entire structure. आप मुझे 15 साल पहले की पिक्चर्स देखें, I look like a different person. मैं तो आपको पिछले साल देखा था तो आप डिफरेंट थे यार. आप खुदा की कसम. क्या होता है तो एक लोग I've been like this for लोग about 10 मेरी तरह years. के एज करें, जो भी मुझे मिलता होगा, साजिद साहब क्या हो गया आपको बेचारे, क्या हो गया. एक तुमको मिलते होंगे, वो कहेंगे तुम क्या हो रहा है, तुम बच्ची होती जा रही हो वापस. Alhamdulillah. माशाल्लाह, you look Thank you.
16, 17 even as I No, speak. I don't, yaar. Ayesha, you look 16, 17 for God's sake. Or is it the attitude you have? I don't look 16, 17. Okay, I do get when I'm traveling, especially, and I wear no makeup, so I do get कि 24, 23, 24, and I'm like, really? लेकिन yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, thank इससे God. पहले कि भाग्य से तुमने ये कहीं स्टेटमेंट दिया था, गलत था, सच था? क्या? ये सच बात है कि तुमने कहा कि पाकिस्तान में मैं सेफ फील नहीं करती? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी तुमने दिया था ये? कि मैं पाकिस्तान में सेफ फील नहीं करती, लेकिन उसके साथ एक स्टेटमेंट थी कि मैं पाकिस्तान छोड़ रही हूँ. वो बिल्कुल गलत है. अच्छा, ये नहीं कि तुम अक्सर तो तुम सेफ महसूस नहीं करती नहीं हो। करती. वो तो सही है, बड़े लोग नहीं करते. वहाँ यहाँ तो मर्द नहीं करते तो सेफ। बस फिर लेकिन छोड़ने ये की बात आपको कहने की क्या जरूरत थी? Why not? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी Because that person अलार्मिंग asked है ना। me, जिस पॉडकास्ट में थी, उसने इस तरह का सवाल पूछा था, वो सवाल एडिट कर दिया तो मेरा जवाब चल गया. एक तो ये पॉडकास्ट से मैं बड़ा तंग हूँ कि हेडलाइंस ढूंढ रहे होते हैं मेरे देर नन, Yeah. दिस नो कंट्रोवर्सी, उसमें कंट्रोवर्सी। सो आप यहाँ सेफ फील नहीं करती, एज अ वुमन बात कर रही हैं। एज अ वुमन भी नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी सेफ फील नहीं करते लोग. मर्द भी नहीं सेफ फील करते. लेकिन आयशा, यू नो ना कि आपकी बात सुनते हैं लोग, पूरी दुनिया में जाती है। हाँ बिल्कुल. आप तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या तो आपका ये कहना कुछ तो थोड़ा सच ज्यादा बोलूंगी. लगा। नहीं नहीं, बोलना चाहिए, मैं तो आपके साथ हूँ। आप तो जितना सच बोलती हैं, कई दफा रोंगटे खड़े हो जाते। हाँ. आप तो बहुत सच बोलती है भाई। मैंने आपके स्टेटमेंट ऐसे ऐसे सुने, बचपन के कुछ वाकयात आपने बड़े खतरनाक वाले बताए। अब आके मेरे में हिम्मत आई है कि उन चीज़ों के बारे में बात करूं. क्यों अब कैसे आई है, क्या वजह है? आई थिंक विद मेच्योरिटी एंड एज, आई थिंक इतना जब अपने टाइम गुजार लिया, आई हैव मोर सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, and I care less about what other people think, and I care more about being honest and authentic. फिर उसका फायदा भी है ना, तो अगर ये कह रही उसके हो तो नुकसान भी हैं. नहीं, फायदा ज्यादा है मेरे ख्याल से। फवायद ज़्यादा हैं क्योंकि क्योंकि आप किसी बच्ची को, जिसको आप एम्पावर कर रही हैं, ये बता के कि ये हुआ, आप किसी के साथ खुदा ना खास्ता हो सकता है, जितने ज्यादा माँ बाप इसके साथ अवेयर हैं, तो ये चीज अच्छी है। बिकॉज मैं खुद बात नहीं कर सकी थी 15 साल, और किसी और के बात करने के बाद मुझ में हिम्मत आई कि मैं भी बात करूं. तो वो जिस शख्स के खिलाफ आपने या इनके बारे में बात की, उनको आप पकड़वाने के चक्कर में नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं वो अजाब अपने ऊपर पालना नहीं चाहती. यू अंडरस्टैंड दैट? इट वाज अबाउट मी स्पीकिंग अबाउट माय जर्नी. लेकिन there's a predator out there then, ना? ही इज नॉट हार्मिंग एनीबडी एनीमोर. ही इज टू ओल्ड फॉर दैट. वाह, या नाउ माफ किया। ही इज टू ओल्ड फॉर दैट नाउ. 20 years ago he wasn't. He was harming a lot of people, not just me. And जब मैंने ये बात की पहली दफ़ा, Sajid, there are so many women who came up to me, called me up, messaged Yeah. me, and said, "We know who you're speaking about." नहीं, इसमें And कोई the शक नहीं same है। has happened to us. And I was like, मुझे नाम इसलिए नहीं लेना क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है. उस वक्त ना कैमरा फोन्स थे, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, कौन ना, यू कुडंट इवन, देयर वर नो टेक्स्ट मैसेजेस एट दैट टाइम, देयर वाज नो व्हाट्सएप. कुछ भी नहीं था। तो आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? डॉक्यूमेंट करने की उस एज में तो आई एम श्योर यू सो नाइव, यू मस्ट हैव बीन सो नाइव, माय गॉड यार। इट वाज वेरी तो ट्रॉमेटिक. ये तो आप तो विक्टिम है ना, तो एक तुम्हारी विक्टिम मेंटालिटी बन गई क्या? ऐसा हुआ कि ओवर पीरियड बीच टाइम? में हो गई थी, अब नहीं है. अब वो नहीं। देखें, क्योंकि इतनी सारी चीजें व्हेन दे हैपन टू समवन, you obviously feel like, why me? मेरे साथ क्यों? And you're angry at the world, and you're angry at society, and you're angry at basically yourself. कि आपने उस वक्त अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? Why didn't you stop it? Why didn't you do something about it at that time? So there was a lot of anger at different things. But over the years, I worked on that and I let it go. I'm like, and that anger is not helping me. नहीं ना। That anger is not helping anyone else. It also stops your growth somehow, It I stops think. your growth. Victim mentality से But you had to get it out of your system किसी ना किसी Yeah, को। so I converted it into gratitude. I'm like, I am grateful for everything that happened to me. In fact, Subhai, I was talking about this. I was in a panel talk with Maheen Khan and someone else. And I was like, there's one practice which I started doing 3 years ago, which has really changed my life.
It's a daily practice that I do with one of my best friends, and it's a little annoying for other people who are around me, and people make fun of me. लेकिन हम 3 वॉइस नोट्स एक दूसरे को भेजते हैं. पहला वॉइस नोट जो है वो एक ग्रैटिट्यूड का होता है. एवरीथिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट डे. हर सुबह. It could be the sky, the coffee in my hand, my flu getting better, anything. Right? But that's a good thing, right? Gratitude. हाँ. बड़ा ज़रूरी है. Verbalize करते हैं हम. ठीक है. And the second voice note is my desires for the day, but in the past tense कि वो हो गई है चीज़. पर मैं ये As if कि हो गई है. As if. तो you imagine it, वो आप imagine कर रहे होते हैं कि I woke up at this time, then I did this, then I went to HMR and I had a 2-hour interview with Sajid Hasan and it was amazing and I spoke my heart out and then I felt like it was a therapy session and then I had a great chat with the HMR team. And you finally... And I booked an apartment for myself. Yeah, there you go. बस खत्म करो इस इंटरव्यू को. मुझे गाहक मिल गया. मेरा कमीशन होने वाला है ख़वातीन हज़रात. छोटा सा ब्रेक लें जल्दी से. मैं इससे कमीशन शेयर की बात कर लूँ लेने वाली. माशाल्लाह हमारे अदाकार इतने अमीर हो गए हैं. मैं इतना खुश हूँ. अभी उनकी वालदा भी आ गई. तो छोटा सा ब्रेक ख़वातीन आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात. आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान. साजिद हसन और ये स्पॉन्सर्ड है बाय HMR वाटरफ्रंट. आज आयशा उमर आपके साथ. सुपरस्टार आयशा. ये वही बुलबुले. अच्छा आयशा क्या मतलब वही व्हाट डू यू मीन टाइम आ गया है? Are you prepared now to get married, hitched, have a kid? So we were talking about my collarbone surgery. So वो surgery है अभी in a few days, and then after that I can't work for 4 months. In fact, 5 months. Are you dreading it or relishing it? Really dreading it because there's so many things I want to do right now, but I'm also relishing it. I think it's a much needed break that I need. और मैं बैठ के बहुत सारी अपनी फ्यूचर की चीज़ों को मैंने फिगर आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है. So it's needed. और वो भी देखना है कि वो जो 18 लाख लोगों की मर्दों की लिस्ट है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट को उसको करना है. तो 1 मिनट के लिए ज़रूरत रिश्ता की हम बात करें. चलिए इस पे पूछते हैं क्या लंबा आदमी होना चाहिए? 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 4 इंच? हाँ, वो पहला जो मेरा प्रीवियस क्राइटेरिया था उसमें वो था. 6 फुट 2 इंच था. कम से कम 6 फुट होना चाहिए. अब वो हो गया है 5 फुट 10 तक चला गया. 5-10 तक मैं. उससे नीचे नहीं. नहीं. That's it. 5-10 से नीचे नहीं. नहीं यार. चलो भाई. I'm just not attracted to short men. I'm sorry. अच्छा एक तो वो हो गया 5'10". हाँ. तो शॉर्ट मैन तो आए ही ना, करीब ही ना आए. नहीं बेचारे. अगर बहुत ज्यादा चार्मिंग हो. What if a short man is very good looking? Yeah. So now my. फिर चांस है थोड़ा सा. It's not about good looks only anymore. I need to have mental engagement with Plus that person. money. Money is not one of the top priorities. क्या बात कर रही हो आयशा? क्या होगा अगर उसके बाद होंडा 70 होगी तो शादी कर लोगी? होंडा 70 में जाओगी? कर भी सकते हैं. There's no. अगर मोहब्बत हो यार आयशा, I really love your sense of sacrifice. नहीं sacrifice. पैसा important ही नहीं है. नहीं पैसा देखिए पैसा. ना गाड़ी important है उसके लिए. कमाया जा सकता है. आनी जानी चीज है. 6,000 शिफ्टें की. एक्टर क्या कमा लेता है? अच्छा कमा लेता है एक्टर. मैं अभी तक अपार्टमेंट नहीं खरीद सकी. अब आप देख लें. 20 साल से काम कर रही हूँ. मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ. मैं भी घर नहीं खरीद सका. तो इसमें कोई बड़ी बात. लेकिन आज मैं अपार्टमेंट बुक करके हाँ वो इंशाल्लाह. मगर ये साथ है कि तुम जिस अपार्टमेंट में रहती हो वो वहाँ बहुत कम लोग रह पाते. बहुत कमाल अपार्टमेंट है. तो तुम यू लिव वेयर. आई लिव. यू स्पेंड. यू लिव वेयर. तुम अपने आप पे स्पेंड करती हो. तुम कहती हो नहीं. It's not about living well. It's about safety. Going back to our previous statement, जब आपने बोला कि my previous statement कि I don't feel safe in Pakistan, जहाँ मैं अभी currently रह रही हूँ, I do feel safe. So I feel safe. तो I'm okay. क्योंकि वो तो बिल्कुल एक gated community है. हाँ. तो इसलिए. So I'm okay with spending extra money for my mental peace of mind and safety. And गलती से दरवाजा खुला रह गया तो पागल नहीं हो जाए. तो ये जो आप safe feel नहीं करती, अभी जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ खातून का कपड़ों वाला,
बिल्कुल उसकी वजह से तो और शॉक में चले गए होंगे। नहीं वो तो बढ़िया एक it's nothing shocking. It is very prevalent in our society, and it wasn't shocking for us. It might be shocking for men because this was the first time it came out into the forefront. But us women go through stuff like this all the time. मगर सवाल ये कि जो गैप है ख़वातीन और मर्दों का, हाँ और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में, क्योंकि हमें तो अपना ही देखना है, बिल्कुल कि बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गल्फ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज इंस्टेड ऑफ कम हो रिग्रेस कर तो किए जा उसकी रहे वजह कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एटीट्यूड ख़वातीन के नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका उसकी वजह है कि मर्द और ज्यादा उनकी थिंकिंग रिग्रेसिव होती जा रही है। क्या फ़ायदा है उसको रिग्रेसिव थिंकिंग? भाई don't क्या करना है मर्द ने आप पे जुल्म करके? Maybe मुझे men समझ are नहीं more आया। threatened by women coming out into the forefront now because हम देख रहे हैं कि खवातीन बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, and I do feel that the toxic male ego is threatened by it. है ना? Yeah. So I feel that मर्द और ज़्यादा resist कर रहे हैं. They want to suppress that even more. It's like किसी मुल्क की अवाम अगर बहुत ज़्यादा उनमें शऊर आ जाए और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इस मामले में आप ख़वातीन की बात कर रही हैं, शऊर आ गया बहुत। शऊर आ जाए और अवेयरनेस आ जाए और अपने हक के लिए अवाम उठना शुरू हो जाए और बात करना शुरू हो जाए तो उनको और दबाया जाएगा ना, या नहीं? डू यू थिंक इट्स हेल्दी? इतना हेल्दी मतलब एक हम अपने What is बूढ़े healthy? हमारे भी ये जो एक डिवीजन हो गया है मर्द और औरत के बीच It's में, not. We need to stop that. We need to be allies. है ना? आई ना? थिंक कहीं ना कहीं तो एक कोएग्जिस्टेंस तो है Alliance ना। होनी चाहिए। आपको वरना आपसे मोहब्बत कौन करेगा? हाँ। आप ये भी देखें ना, नहीं मोहब्बत आपकी करने के लिए बहुत खूबसूरती है। पे शायरी कौन करेगा? नहीं आपके लोगों के नखरे क्यों से? एक बात है, तुम लोगों को इक्वल राइट्स चाहिए तो नखरे क्यों कर रहे हो फिर यार? इक्वल लोग राइट्स लो। कौन? खाम का मतलब नहीं, तुम लोग कौन? खवातीन की बात हो रही है। आपको नहीं चाहिए इक्वल राइट? मैं तो अपनी बीवी से मांग मांग के थक गया हूँ, अभी तक नहीं मिले हैं। मुझे तो बीवी से अपने खुद राइट्स चाहिए। इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि खवातीन कहें कि हम मर्द से बेहतर हैं, हम ज़्यादा हैं। अगर इक्वल राइट्स का मतलब है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होनी चाहिए। इक्वल राइट्स का मतलब है कि बेसिकली ज़्यादा वर्क स्पेस में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होनी चाहिए जितनी। लेकिन इस दौरान कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी चीज हुई जिसने आपकी शख्सियत पे कोई बहुत बड़ा गहरा असर डाला हो? Of course, I've met some wonderful men in my life. I was not ready to be married. I did not want to get married. Oh God, Yeah. Aisha, now do you regret that at Not times? at all. You are such wonderful men. If I was your elder brother, I'd be very angry. I Yeah? am so thankful to myself. I am so grateful कि मैंने इस स्टेज में मैं पहुंची हूँ where I have been able to do those things and work on myself and change myself and heal myself by being by myself. वो मेरे अकेले होना Loneliness जरूरी से था। घबराहट नहीं है? I'm not lonely. नहीं, अकेला आदमी रह रहा है, कुछ है। लोनली से मतलब एक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। And you, I grew up scared of being alone all the time. I had this constant fear of being alone. I always wanted to be around people. I was the most social kid. Ask my mother, मैं घर पे एक मिनट नहीं टिकती। now सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा काम है वो एक सिटकॉम है जो आउटस्टैंडिंगली मशहूर हुआ, उसकी ऊपर जरा आते हैं क्योंकि इससे पूछे थी। नहीं आयशा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान में साजिद हसन। बात हो रही है सुपरस्टार आयशा उमर से, और बिल्कुल हम उनके आइडियल मर्द को देख ही लेंगे एक दिन।